Hello, hello, hello. Welcome back to our FPL podcast with our experts here, Ravi Narayan Rath and Meet Rajani. Ravi has been leading the mini league of Ahmedabad FPL since last 2 years, and before that, Sir Meet Rajani was leading it. So today they'll guide you with the new season that is upcoming. So let's begin. Yeah, so welcome back all. Last season we could not continue further because due to various reasons I was not available in the second half. But hopefully we are back this season. तो इस season hopefully हम पूरा season continue कर पाएंगे FPL podcast. Before the first game week of the season, we have with me Rabi, जो 2 साल से टॉप कर रहा है. So I am going to after the crown of LFC Ahmedabad again. Hopefully this time I will be the one. But देखते हैं. Basically competition tough हो गया है LFC Ahmedabad में. So let's see. और हमने इस बार क्या है कि moderator बदल दिया है. Moderator is now Chintan. Yes, now I'm the new moderator, and Ashutosh and Vatsal and Dhaval has retired from LFC Ahmedabad. So you'll have to bear with me now. So thank you very much for this position, and let's continue. Yep. So okay, so the first question is that how was your previous season in FPL Meet? So last season, मेरा last season was poorer compared to the previous seasons, I would say. As you can see, 2021-22 में I finished 1,73,000, which is not my best. Usually I've been finishing under 1 lakh in the previous season. If you can see in the last 3 years, I have finished under 1 lakh, but last year अच्छा नहीं था. But I think Rabi का last 2 years से बहुत ही अच्छा जा रहा है. So Rabi, what was your finishing in last 2 seasons? Thank you, Midbhai. Welcome back to the new Fantasy Premier League season. Actually, last 2 season luckily मेरा अच्छा जा रहा है. The previous season actually COVID के वजह से थोड़ा रुक गया था, rank stacked हो गया था, ऐसा हुआ था. But finally I have मतलब catch up that gear and finished within top 30k the previous season. Okay. And on 2021 I finished within 4k 3960 overall. So Rabi, 30k and 4k were the respective finishes in previous season. That is the overall standing. Hopefully we might finish nearer to this season as well. Yes, I hope you both got good points, and let's see what happens next. Yep. Okay, so we are moving towards the next question, which is which players are FPL bargains for this season? So Midbhai, what do you think? Who are the FPL bargains this season? Every year ऐसा होता है कि कोई ना कोई FPL bargain निकल के आता है. Usually second और third week से it becomes more clearer कि कौन FPL bargain है. But इस सीजन before the start of season ऐसा लग रहा है कि पैटरसन फ्रॉम एवर्टन, जो कॉलमैन का बैकअप ऑप्शन है राइट बैक पे, और कॉलमैन एट प्रेजेंट इंजर्ड है, तो आई थिंक एक पैटरसन एट 4 million इज अ गुड बार्गेन. फिर परेरा इज जॉइंट फुलहम, तो यूनाइटेड में उसको चांस नहीं मिला, बट आई थिंक फुलहम में ही शुड बी अ रेगुलर प्लेयर. तो परेरा इज आल्सो अ गुड ऑप्शन एट 4.5 इन मिड. Also, how old is he? 26. Sorry? He's 26. Okay, he's 26. Pereira is 26. Actually, he represented our Cavallero. He is playing now just beside Mitrovic, number 10 position in Fulham. Right. Okay. Yes. Okay, so but his price is now 4.5 million only. Oh, so nice. Proper bargain. And the another guy is Nico Williams, who is playing right wing back in Nottingham Forest. He is also at 4 million. So initially first initial fixtures में I think ये 3 options are bargain, what you can say, bargain players at minimum price bracket. So I think these 3 are good to have in the team. Apart from this, I think if Rabi has anyone else in mind, he can let us know. Today only
Leicester goalkeeper Michael has joined Nice. So Ward has Ravi, become your voice is bit low. If you Yeah, can आपका Okay. mic थोड़ा please. Yes. Okay. Now I'm Perfect. audible. Yes. Yep. Okay. So Michael अभी भी Nice join वो लेस्टर छोड़ चुका है. तो डेनी वार्ड जो है 4 मिलियन का गोलकीपर है और आइवर्सन ने 4 मिलियन गोलकीपर. तो हम जैसे 8 मिलियन गोलकीपर में लेस्टर जैसा टीम का हमको मिल सकता है both goalkeepers. So Unless Danny until Ward they and sign another one you are saying is Iverson. Emerson. Okay, right. Emerson. Yeah, Iverson. Emerson. Actually, he is again a 4 million goalkeeper only. But unless and until they don't sign a goalkeeper, Danny Ward will be a bargain. Right. Perfect. Okay. So that's another bargain to have in the goalkeeper section as well. Apart from this, Ravi, कोई और ध्यान में हो सस्ता वाला जो तुम्हें लगता है कि खेलेगा या खेल सकता है? अभी नहीं लगता है, बट मुझे लगता है कि लीड्स का जो ग्रीनवुड है धीरे धीरे सीजन बढ़ते बढ़ते वो क्योंकि उसका मैनेजर जैसे बोल रहा है कि ग्रीनवुड पोटेंशियल दिखा रहा है तो धीरे धीरे आएगा. अगर रोड्रिगो थोड़ा भी खराब परफॉर्मेंस दिया तो ग्रीनवुड आ सकता है. Okay. So Greenwood is the one Greenwood is bunch on the to radar watch as with. well. Yeah. Yep. Yes. Cool. So Cool. okay, let's move ahead then. Okay, so coming to the one of the main questions of the FPL, like what is the best formation to go in the FPL? So I would say कि usually पहले क्या रहता था कि forwards और midfielder packed रहता था और defense इतने importance नहीं था, तो usually people जाते थे 3-5-2 या 3-4-3 से right formation FPL में. But I think in the past 2 years this has changed क्योंकि premium defenders like Cancelo and Trent के आने से yes they are almost acting as a good midfielder or good what you can say a forward. So I think इस लास्ट 2 ईयर से आई थिंक 4 डिफेंडर्स खिलाना तो मस्ट हो गया है. तो आई वुड से कि या तो 4-4-2 या 4-5-1. आई थिंक फॉरवर्ड्स का इतना नहीं रहा है अभी. चीप फॉरवर्ड्स इतना नहीं बेटर रिटर्न दे रहे हैं जितने डिफेंडर्स दे रहे हैं. सो आई वुड से कि पर्सनली आई वुड प्रिफर टू गो विथ 4-5-1 और 4-4-2 फॉर्मेशन दिस ईयर. So you're trying to say here that sometimes defenders are fetching more points than what forwards or midfielders can do. Yes. Perfect. So if you would see last season का stat देखोगे तो Trent and Cancelo has picked up more points than I guess De Bruyne. So I think 4 defenders are must have. Good premium that defenders will yield you more points. रवि, तुम्हारे हिसाब से कौन सा फॉर्मेशन इज आइडियल? पहले तो ऐसे था 3-4-3 ऐसे जाते थे, बट अभी जैसे गेम धीरे धीरे इवॉल्व हो गया है तो विंग बैक्स आर मोर अटैकिंग लाइक चेल्सी, मैन सिटी, लिवरपूल, एवरीबॉडी. सो 4-5 or 4-4-2 is the best, but someone is going with 5-4-1, 5-3-2 like this formation with all wing backs. Right. Okay, like the Spurs wing backs, Doherty and Perisic. Okay, they are like almost playing like wingers. Okay, so Man City's fullback, our fullback, and Spurs fullback, all three are like very very dangerous. Okay, 5-4-1 sounds really interesting. 5-4-1 is very interesting, yes. But let's see how the season progresses. So basically, I think, yeah. So to sum up, मैं कहूँगा कि लास्ट 2 ईयर से आई थिंक पहले को इतना प्रेफर नहीं करता था, बट अभी से ट्रेंड आ गया कि एटलीस्ट पीपल आर हैविंग गोइंग विथ 4 डिफेंडर्स एटलीस्ट. Right, because he's also getting more assists and helping out the team with points, right? If they get a clean set and assist, they will get the bonus also. The free bonus they will take. Like exactly. Robertson and Trent are the bonus monsters. Yep. So वो भी एक एडवांटेज है. Okay, so we got the formation. Then moving ahead. Okay, so now teams with the initial best fixtures. Meet by. What do you say? Yeah, so I think initial fixtures अगर स्टडी किए जाए तो if I would say कि आर्सेनल के fixtures are good initial run. तो as you can see, Jesus का highest ownership है. Right. Another is Liverpool के भी easy fixtures है. And I would say कि Spurs का भी initial run easy है. Avoidables में I would say कि
चेल्सी का इनिशियल रन इतना आई वुड से कि आई एम नॉट गोइंग टू गो विथ चेल्सी इन इनिशियल रन एंड yeah, so these are the few things that I have in mind at present. रवि, तुम्हारे पास कोई ऐसा ध्यान में हो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे 3-4 फिक्सर इसको टारगेट करने हैं? मुझे लगता है उल्स का बढ़िया फिक्सर्स है एक्चुअली। या उल्स का शायद लीड्स से शुरू होता है, फुलम, लीड्स, फुलम, बॉर्नमूथ भी है पहला 5 गेम वीक में। एक मुश्किल फिक्सर्स है टॉटनम है। राइट, यस। दूसरा Okay, मेरे ध्यान so में है न्यूकासल के भी इजी रन है इनिशियली। हाँ, so we can actually pick players from these teams. So yeah, yes. तो ज्यादा पॉइंट्स हम yield कर पाएंगे। yes. Perfect. Anything else, Ravi? एक्चुअली लिवरपूल, मैन सिटी तो कभी भी पिक कर सकते हैं, दे आर फिक्स। Yeah, I think वो तो एवरग्रीन है। I think Liverpool and Man City are fixture neutral, तो वो तो मैंडेटरी थिंग है। वो तो मैंडेटरी थिंग है, बट एक्सेप्ट दैट मुझे लगता है कि उसका थोड़ा अंडर इसमें जा रहे हैं। उसका बढ़िया फिक्सर्स है और पेड्रो नेटो जैसे 5.5 में अवेलेबल है, जो कि इनसाइड फॉरवर्ड जैसा प्ले कर रहा है पूरा। यस, क्योंकि लोग उसको भूल रहे हैं, जैसा प्लेयर था प्रीवियस टू प्रीवियस yes, I remember. बहुत अच्छा प्लेयर था। एक बहुत ही क्रूशियल थ्रेट था वो पूरा। आई थिंक वुल्स injury का की मेरा वजह एक से ही आई थिंक वुल्स का मेरा एक ही कंसर्न है कि हिमेनेस इंजर्ड है, तो देखते हैं कि नेटो का रिटर्न कितना इम्पैक्ट होता है। हिमेनेस गॉट इंजर्ड इन द हिमेनेज और पुराना हिमेनेज भी नहीं रहा था पिछले सीजन में। यस वो यस हिमेनेज भी ड्रॉप होता रहता था। यस यस। Okay, so we got the initial best fixtures teams, and moving on, next is the final draft team. So Meet bhai, what do you say? Yeah, so on the left is my draft team, Yes, and so on this the one right is Meet bhai's, and this one is Ravi bhai's team. yeah, so on the right is Ravi's team. So I have initially gone with Ederson because I can't afford Cancelo initially. Trent because he's going to stay for the entire season. Arsenal ka fixtures easy hai, so I am accommodating White. Patterson at 4 million is bargain, Yes. and I am going with 8 Nuri because uska Wolves ka initial run easy. As Rabi mentioned कि Neto is good at 5.5, so I am going with Neto as well. फिर Son, Salah, and I am going with Rashford because now Martial भी injured है and Sancho is also ill. Okay. So Rashford is nailed down to start, and let's see if Ronaldo starts or not. And I'm going with De Bruyne because I was not convinced by Haaland's performance against Liverpool. So initially I am thinking of going with De Bruyne and only one striker, that is Jesus up front. And bench पे I kept जो मतलब 4.5 और minimum 4 million वाले हैं वो. So this is my initial draft, but this could change. But अभी initially तो ये settled लग रहा है मुझे. And that's looking a very threatening team, to be honest. Like Jesus has been spectacular, even in pre-season, and Yes. every game I've probably, and almost every other player that you put in your team. Now I think Rabi can let's move on explain to his Ravi. draft as well. Actually, I have gone with three premium grabs, similar to Meet Bhai. I have gone with 2 rotating goalkeepers. Actually, Ward और Sanchez, इन दोनों का rotation से मतलब Ravi, I'm sorry to interrupt. If just you can put your mic a little bit. Okay. Now it's audible. Yes. Yeah. Actually, मैं goalkeeper rotating goalkeepers के साथ गया हूँ, Ward and Sanchez. ओके, उन दोनों का फिक्सर्स रोटेट भी हो रहा है और दोनों का दोनों मिलके 8.5 गोलकीपर में हो जा रहा है, तो इसलिए मैं रोटेट गया हूँ। और ट्रेंट, तो नो explanation needed. And Robo is, I think Robo is also Robo now, means the community skill performance just मतलब वो पूरा दिखा दिया कि रॉबर्टसन क्या कर सकता है। पूरा यस बाहर जा रहा है तो रॉबर्टसन बॉक्स के अंदर ही रह रहा है। और मैं स्पर्स का पेरिस को रखना चाहता था, बट ड्यू टू मनी आई हैव गॉन विद डॉहर्टी नाउ। निको और पैटरसन में रोटेट करता रहूंगा, निको विलियम्स एंड पैटरसन को। दोनों 4 मिलियन का है। देन डेली इज देन अनदर ऑप्शन फॉर एस्टन विला फर्स्ट 3 गेम वीक। एक्चुअली जैसे जेरार्ड ने बोले हैं कि
मतलब बेली अभी इंजरी से वापस आया तो बहुत ही एक नया प्लेयर जैसा दिख रहा है पूरा, मतलब बढ़िया खेल रहा है। और 5 million इज ए वेरी वेरी बार्गेन फॉर दैट प्लेयर। Yeah, right. ओके, एंड बोर्नमूथ ऐसा है कि उसका मैनेजर बोल दिया है कि हमारा सब सेंटर बैक इंजर्ड है, हम अभी मतलब लिटरली 2 महीने के बाद हम एक बुरा टीम बन गए जो होके आए मतलब और ज्यादा मतलब ये घटिया बन। देन नेटो इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अगेन 5.5 इनसाइड फॉरवर्ड, good fixtures. Salah is again okay the best player, and Son एक्चुअली मैं केन के साथ जाने वाला था और बाकी 8 million मिडफील्डर को रखने वाला था, बट मुझे लगा कि मतलब हालैंड का मुझे चाहिए सेकंड गेम वीक के लिए, बिकॉज बॉर्नमूथ है होम में। ओके तो Right. वो 2-3 इतना चांसेस मिलेगा उसको, मिस करेगा भी 4-5 गोल मार देगा लगता है। Right. मतलब मिस करने का इतना वो नहीं है क्योंकि he is वही playing as a proper striker now. So एग्जैक्टली and we have seen him score really beautiful goals even in Yes. Dortmund and every other team. So एग्जैक्टली सो सन साउथहैम्पटन के साथ तो मतलब वही है, मतलब वो लोग साउथहैम्पटन थोड़ा फॉर्मेशन चेंज किए, 3 एट द बैक खेल रहे हैं अभी, बट okay. फिर भी मुझे लग रहा है सॉन एंड कैन लिंक अप से सॉन मतलब मुझे ज्यादा गोल मार देगा। और पहले सेकंड फिक्सर ही थोड़ा बुरा है इनका, टॉटनम का, चेल्सी अब है, उसके बाद पहला 4-5 फिक्सर में रख सकते हैं टॉटनम प्लेयर को। And Jesus Perfect. is like the highest ever record तोड़ दिया उसने, highest ever ownership 70.71% something is that। और बेंच में है another again and Greenwood is Leeds। Yeah. Okay. This is the thing. So this is it from us. Okay. I think So yeah. Chintan. Yeah. Yeah. So thank you very much everybody for joining in, and this was our FPL podcast for the pre-season. We can say for the first few fixtures, and I think you all might have got some great insights from this podcast. Thank you very much. Let's wrap this up. Thank All you. the best all. All the best.